So, dear students, welcome to the class of Masters of Business Administration. Today we are going to talk on importance of reading skills and sub skills of reading. The father of English essays, Francis Bacon, said that reading maketh a full man, conference a ready man, whereas writing an exact man. Who said this? Francis Bacon. Francis Bacon, sir. Where did he say this? On his essay of studies. There he talks about and begins the essay with the lines like study serves for delight, for ornament, and for ability. Their chief use is in privateness and retiring. Here you can substitute studies for reading. And then you can narrativize each line the way. Here this quote may be applied for 3 skills of language learning. Let me elaborate it. Reading maketh a full man. Conference a ready man, whereas writing an exact man. When you talk of reading maketh a full man, means reading provides us more knowledge and ability to ponder over the things and abilities to sort out the complex problems of our day-to-day life. That's why reading is important. When you talk of conference a ready man, you also realize the power of speaking. And then there comes the writing. There are 4 basic skills of language learning. You already know all those. LSRW. L stand for listening, S for speaking, R for reading, and W for writing. So you might be able to analyze that how these skills are significant in framing the human ability to assess these, to equip him with the ability to sort out certain problems and ace his language learning skills. This quotation, I would like to again ask you a question based on this. That the quote that I said, how and where can you apply? Any one of you?
How will you be applying this quotation? Like reading make it a full man. अध्ययन आपको पूर्ण मानव बनाता है. Conference ready man. Sir, I would like to give an answer. Yes, please. Sir, by reading a things, we can get a holistic development. अगर हम देखें इसको पूर्ण रूप से एक इंसान तैयार तब होता है जब उसके पास एक अच्छी नॉलेज होती है. आपको पढ़ने के अगर इंसान पढ़ता है उसको एक अच्छी नॉलेज होती है, उसकी इमेजिनरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और उसके पास एक सबसे अच्छी चीज होती है, वो चीजों को रिकॉल रखता है अगर वो पढ़ता रहता है तो. अगर इन्हीं सारी चीजों को हम कंबाइन करें तो सर वो एक पूर्ण रूप से इंसान बनता है. Good. Anybody else? Anybody else, please? Now, the second part of the quote, conference ready man. When you talk about conference means speaking here. So how does conference makes you ready man? Anybody please? Whereas writing an exact man. Please let me know. How writing can make you an exact man. So good afternoon, sir. Yes, please. So writing makes exact man because in writing we write the actual facts, absolute facts. That's why it makes a Very good. So, and if a person practices writing regularly, chances of mistakes and errors will be reduced day by day. And that will add accuracy to his writing. And that's why writing makes an exact man. Let us talk them in the professional terms. So if you have, suppose that you have done or you have studied thousands, you have read thousands of case studies, thousands of professional cases. So what will you learn out of that? Having exposure to the wide exposure to the studies that how one case is solved, how people or experts approach to sorting out the cases, solving certain problems. You will be also having the knowledge in the mind of your minds that given the situation arises in what situation, what decision has to be taken. And you will be able to identify
that what decision can lead you to the failure and what avoiding what will lead you to the success. So applying and avoiding jurisprudence of judiciousness, that is the gift of reading skills. So the importance of developing reading skills. Now you will realize that there are multiple types of reading. Francis Bacon, that essay itself of studies, narrativizes the complete significance of reading, where Francis Bacon says that study serves for delight, for ornament, and for ability. One who is well read will be well versed in conference mannerism. For example, what to speak where and what not to speak in a particular situation. That reading will give him power of judgment. Then there comes, in that very talk, we said that we are also supposed to study Akriti Jaiswal. What are you doing? Sorry, sir, it's my mistake. So in a given situation, how will you be sorting out certain problems? And what are the types of reading, different types of reading? Again, I would like to quote Francis Bacon, who said, some books are to be tasted, some others to be chewed and digested. That will give an idea that definitely there are multiple types of reading. There are different types of reading. And different types of reading is to be applied in different situations. As we discussed in the listening skill, similarly, let us approach to the different types of reading. So the first type of reading will be, again, scheming. First type of reading is scheming. What is scheming? You might have seen a bird swimming on the foam of the ocean. आपसे पूछा जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर बुक को कितने टाइम में पढ़ जाते हैं, तो योर आंसर विल बी डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द बुक. If the book is any text that you read at your puja time or worship time,
अगर तो वो किताब हनुमान चालीसा है तो आप बोलोगे कि जी हम तो 1 मिनट में पढ़ जाएंगे। व्हाट इज दैट? आप उसको एक तो लाउड रीडिंग है, अदर वन इज साइलेंट रीडिंग, then another one is scheming as the bird is swimming on the foam. Then there comes स्कीमिंग। क्या है? रैपिडली आपने आई बॉल को जो है आप टेक्स्ट पे रन करा रहे हैं, यू आर जस्ट रनिंग, your eyes are running as fast as possible and you are just trying to get the sense of the term. Then there comes scanning. What is scanning? If some diagram is there, if certain figures are there and you want to get clarification or you want to memorize that, some mathematical calculations are there and it is so significant but critical. So what will you do? You will just try to look at the text with the complete focus, as if you are scanning the document inside your memory. That is known as scanning, where your complete focus is there, and in examination like scientific diagrams, data, chart, as if you fix it in your memory. And by the time, in the critical times like in examination, you just focus on your memory and you recall all the details, data. That is known as, that kind of reading is known as scanning. Scheming, scanning, and then there comes reading between the lines. What is reading between the lines? When you talk about reading between the lines, that what is not represented in the skeleton of the words and what is beyond the skeleton, you also could guess applying your mind. Then you are blessed with the ability of reading between the lines. How will you do that? Let me give you a bit clarification about the title Reading Between the Lines. शब्द विन्यास से परे भाव की खोज। What the author has in his mind and you tried to capture by adopting certain mechanism. As if in the lines, to be or not to be, that is the question. It's a very popular line, to be or not to be, that is the question. And if you will try to realize it, people start adopting certain strategy, that what was there in the mind of Shakespeare that he could write such line like to be or not to be. That is the question. How to interpret, how to narrativize, how to elaborate these lines. Many a times if something is said, if something is written, there are different or multiple sort of strategies working behind the creative mind of the
artist or writer or the poet or composer or the man who is writing it. There are multiple sort of clusterization and that is being frequent used. There are multiple sort of consonants in use. If somebody is using L, M and frequently, means the person is in lyrical mood. So based on the use of the vowels, consonant, based on the use of, clusterization, you may have an opportunity to guess the situation that what was going on behind the mind of the person who has written that particular thing. Let us try to look at, and you will also be, if you are well trained about the writing styles that we have discussed during PowerPoint presentation, where introduction to various types of writing styles, then you will also be able to explain or understand or draw the inference that what is going on in the mind of the writer. Because the text is given, but based on the text, you can draw some clues regarding the context. You might be surprised to know that meaning doesn't lie in the text, rather it lies in the context. Like, I would like to give you one very small example before closing this topic, and I would love to see, I would love to invite your attention. That suppose that some expert has said or some line is written, sun is setting. For drawing its meaning, you need to realize that in what context that is written. Because text is what sun is setting. If the context is thousands of year Indian Gurukula, then the disciples staying over there in the Gurukula will start drawing the meaning that it's time for Sandhya Vandana, Archana and Puja, and they will start collecting flowers so that they may go with their Guru to the bank of a river and they may offer their prayers over there. That same term, sun is setting, is having that meaning. But if you have replaced the concept of context, and if context is changed and the same line is attached with the context of a robber, so sun is setting will, and if the robber's head is telling that sun is setting, so what will happen? His goons will start drawing the meaning that it's time for robbery and we should start collecting. They will start collecting their weapons and arsenals for, for robbery they wish to do or loot they wish to conduct in that particular night. Sun is setting. For a traveler, it may have another meaning that he need to hurry up, and as the night will fall and it will be quite difficult to drive or move in the night. If sun is setting said by a lover to his beloved, it will have another meaning and the whole context will suddenly take a romantic turn. So you might see that there are different types of reading, and reading is a skill. One is required to ace his reading skills so that he can
apply his mind to the specific context and try to guess it. Not one must not try to read only the text, rather he should apply his mind to guess that in what context a particular statement is made. And if you are having proper and extensive reading exposure, it will be quite difficult for you to draw the inferential meaning. So today we completed the importance of developing reading skills, the sub skills of reading, and if you have and reading between the lines. If you have any query, please feel free to ask. आपके पास सवाल है, पूछ सकते हैं. Sir, Yes, sir, beta. detailed reading is also termed as reading between the lines. No, beta. That is explanatory sort of reading. Detail reading. You can that way. If you will go, you will have to think that again. Partial reading, selective reading, and detail reading. Like sometime you study, you read a novel, and people say that I can study a novel in one day, 24 hours. Somebody says that I can read a complete novel in 4 hours. Somebody will say. So how will they read? They will adopt different strategy. They will read 5-10 pages thoroughly. Then after that, they will start running fast. Then somewhere they will find anything important. They will stay there. They will try to put more time, and then they will go to the conclusion complete. Some of the people are of the habit, they will, they are selective that way. They will begin first 5-10 pages very thoroughly, then they will skip few pages, then they will go to the conclusion, they will read. So that is again a sort of selective reading. Then partial and selective, and then you will come to the uh, detail reading that way. Detail reading. That's why I said that Francis Bacon has said that some books are to be tasted. Tasted means what? A complete dinner is there. You are tasting the sauce. Clear? In the out of the complete food in your plate. So you will be tasting the sauce. Some books are to be tasted. Some others to be chewed and digested. उसको आपको चबा चबा के पचाना पड़ेगा बुक को. So when you say detailed reading, that means that some books are to be chewed and digested. उसको आपको च्युइंगम की तरह चबा चबा के चबाना पड़ेगा. Chewed, and you need to digest the content based on the importance. तो बुक जो है पूरा फूड आइटम की तरह और मेडिसिन की तरह होता है. हाउ you are taking with that. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Nice question, beta. It added clarity to the class. ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए. आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो. Very good. Thank you for asking, in fact. Anybody else? Please, any more question if you have? Yes, beta, Himanshu. Please ask. There is one thing. I am moving to the next topic. If you are not asking any question till now, there is one thing, understanding the writer's point of view. Clear?
How will you understand the writer's point of view? Please tell me, how will you understand the writer's point of view? By reading the text. There are multiple theories if you go in detail, but that much is not expected from you. One theory is very popularly known as reader's response theory. What is that? Reader's response theory. How readers respond to a particular text. So who is important in this theory? Reader. But when you try to understand that in what context a writer might have said this, clear? So that way you need to analyze that in what age, in what setting, in what context a particular statement is made. A statement that is said in the battlefield may not fit to be a statement at a time of peace. And many a times writers have motive to write a particular text. They have some idea, or they may have certain messages to be conveyed. They advocate something, and in order to advocate that opinion, they write particular thing. So many a times we need to look for, or we need to know, or we need to analyze the writer's point of view. Why did the writer has selected to end any particular novel in that way? What kind of motive he was having? What does he want to convey? राइटर लिखते वक्त बहुत दुखी था, खुश था, was he happy, was he sad, in what mood was he? So text is also a clue to get the idea that in what mindset a particular text is developed. That is what required or expected from readers. So will you please raise certain question or discussion that how understanding the writer's point of view and understanding the main idea and the supporting detail. Please ask any question if you have regarding this in your mind, and let us extend the discussion further. It's over to you, dear students.
Please feel free to ask. Understanding the main idea and supporting details. See, while drafting the epic of Mahabharata, the writer was having, Ved Vyasa was having the pre-plotted idea in his mind that the character of Duryodhana has to be the character of a bad man. आप मेरे से पूछ सकते हैं सर हाउ कैन यू से, आप पूछो मेरे से, हाउ कैन यू से that Ved Vyas was having in his mind that the character of Duryodhana has to be portrayed as the character of the bad man. See the name of Duryodhana himself. Dur means a prefix that is having bad. Clear? Yes, sir. When Ramadhari Singh Dinkar started portraying Duryodhana as a good character while highlighting the friendship of Karna and Duryodhana, he changed Duryodhana to Suyodhana. He used that word. He turned the name, and not only that, similarly, the name of Dusasana was used. So even naming of the character was projecting the main idea and the supporting details. आप कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, your name matters that way, and the name of any person who is being used in a literary context or text. So you can guess that main idea was to portray the character of Duryodhana as the character of villain. And that's why the name of Duryodhana was given as Duryodhana. The character of, Dhritarashtra was to be portrayed. Earlier, you might be surprised to know in the epical India or that way, the character of people with disability was portrayed with the negative roles. जो विकलांग लोगों के रोल होते थे पहले एपिकल इंडिया में, मोस्टली वो निगेटिव रोल होते थे, वो ऐसे बनाए जाते थे. बहुत बाद तक शायद एक मूवी बनी ब्लैक. That movie, in that movie, I think it was Amitabh Bachchan. Yes, sir, Where, Amitabh Bachchan. where the blind person, he was teacher, I think. I have not seen, but I have listened. And the character of the girl was portrayed as blind. So probably that has been one of the best character and given to the person with disability, blind होने के बाद भी. Otherwise जो मान लो विकलांग होते थे, जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, या जिनको कोई भी जो निगेटिव कैरेक्टर होता था उसको उससे एसोसिएट कर दिया जाता था. They used to be associated. So if the description of
और कहते गेट अप ऑफ द कैरेक्टर. यू विल फाइंड, अगर आपको बहुत गरीब सा फटे चीथड़े कपड़ों में रावण का रोल बना के सामने रख दिया जाए किसी को, तो आपको पहले तो उसको किस बात का घमंड होगा? रावण अहंकारी था. जब वो गरीब होगा तो उसे अहंकार किस चीज का होगा? बोलो. गरीब आदमी को किस चीज का अहंकार होगा? तो रावण होगा तो हैज टू बी रिच, ही हैज टू बी स्वर्ण नगरी, ही हैज टू हैव. सोने की लंका होगी तभी तो उसका घमंड होगा उसको. बताइए. Yes, sir. तो सपोर्टिंग डिटेल क्या है रावणा के लिए? दैट रिचेस, prowess, power, glory, knowledge, the boast of heraldry and the pomp of power, all that beauty and wealth can ever give. गरीब आदमी को किस बात का घमंड होगा? So you can have an idea, understanding the main idea and supporting details. So how will you guess the main idea? By the supporting detail, environment. Clear? अब भगवान राम को क्यों उनको सारी क्वालिटीज दिखानी थी, तो उनको राजमहल से निकाल के जंगल में दिखा दिया गया. सपोर्टिंग डिटेल क्या लाया गया? कि हैज टू गो फॉर एग्जाइल. उनको वनवास में जाना पड़ेगा. गौतम बुद्ध को वनवास में जाना पड़ेगा. He has to go out of the palace. Clear? So that way, otherwise एक आदमी पैदा होते बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, पूरा जीवन बहुत अमीर रहा, तो उसके कैरेक्टर से आपको कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं मिल रही है. You are not having, you are not being able to realize that something. इसलिए लाइफ में एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों आते हैं. बोथ ऑफ देम डू कम. सो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आपको इन चीजों को समझ समझ के देखना पड़ेगा. आप देखिए कि विलेन्स के नेम्स इवन इन द मूवीज कैसे प्रोजेक्ट होते हैं. कातिया और गब्बर. So you have, yes, you have Mogambo. So how these names are projecting? ठीक है. अब अगर मान लो गब्बर की जगह सुशील उसका नाम होता, तो कैसा लगता? विल दैट साउंड? द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू में वो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करते. गब्बर्स गेटअप हैज टू बी लाइक दैट. कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग, एवरीथिंग हैज टू बी. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर जैसे कि नाम से ही वो उसके कैरेक्टर को शो करना चाहता है कि जैसे गब्बर तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर रोल है, तो जैसे नाम से ही कि वो हाँ कितना भयानक है, कितना खूंखार है, इस तरह से वो दिखाना चाहता है. नाम से ही एज अ पर्सनालिटी शो करता है. बिल्कुल. अंगुली माल. यस सर, अंगुली माल डाकू. तो अब जो है वो अब उसको रिलेट कर रहा है कि लोगों की उंगलियों को काट के माला बना के पहन लेता था. He used to do that. Clear? वो एंगर, वो चीजें दिखनी चाहिए ना चेहरे पे, उसके नाम में दिखनी चाहिए. So that way, that setting, that context give meanings to the reader and give setting. That setting provides, environment provides, that plot provides. So understanding the main idea and our writer's point of view also
For understanding the writer's point of view, you have to have calculated clues. Yeah, how is this all related to the business world? What it all has to do with the business? उसका बिजनेस से क्या लेना देना है? बोलो, इसे आपको ये लेना देना है कि while reading सर the company's document, when you are reading the company's document, you should be careful. वो कहते हैं जैसे वो स्टार लगा के छोटा सा लिख देते हैं और वो ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट होता है और बड़े बड़े चीजें दिखाते हैं, हम आपको ये प्रॉफिट देंगे, ये प्रॉफिट देंगे, ये प्रॉफिट देंगे, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद पता लगा कि वो आपको कैसे लूट रहे हैं और बोलेंगे आपने तो ये देखो हमने लिख रखा है, यू आपने इसको ध्यान ही नहीं दिया, यू डिडंट फोकस ऑन दैट। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट बोलती है आप इंश्योरेंस कराइए, गो फॉर लाइफ इंश्योरेंस। एक लिमिट के बाद अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो वो आपको मिलेगा ही नहीं, इवन आफ्टर डेथ। डेथ बेनिफिट नहीं ले सकते आप उसका, बहुत सारी चीजें, वो पैसा डूबता चला जाएगा। एक लिमिट से ज्यादा अगर प्रीमियम आप दे रहे हैं, आपको क्या करता है एलआईसी का एजेंट कभी बताता है सर एक पॉलिसी और करा लीजिए, एक पिछले साल कराई थी, एक इस साल करा लीजिए, एक दूसरे एजेंट से कराया, एक इस एजेंट से करा लीजिए, यू गो फॉर दैट। सो व्हाइल रीडिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, you need to be very, very cautious. While reading any agreement, you need to be very, very focused. While going on to the business text, you need to realize you need to be thorough. Thorough reader नहीं रहोगे तो आपको कभी ऐसा एग्रीमेंट में 2 लाइन उलट पलट देगा, आप परेशान हो जाएंगे, and that you will have to take the loss, bear the loss of business. Clear? If you have any question about reading, today we have discussed importance of developing reading skills, the sub skills of reading, and fluency building is also the part of reading. Understanding the main idea and supporting details, reading between the lines, and inferential reading. What is inferential reading? You try to draw some conclusion based on the logic. You draw some inference. For example, let me give you some example of inferential reading. I would love to give you 2 examples from Hindi. Clear? Then I would like to relate it to the language. एक बच्चे ने बोला था हमसे, अभी आकृति ने क्वेश्चन किया था, डिटेल रीडिंग। एक लाइन है, ग्रह नक्षत्र वेद सब जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। इसका मीनिंग निकालो सारे बच्चे। Sir, please repeat. ग्रह नक्षत्र वेद सब जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। मीनिंग निकालिए इसका। कौन सा रीडिंग है इसमें? शब्द में तो मीनिंग ही नहीं है। सामान्य ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता। ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं है जिसका आप मीनिंग नहीं जानते। You need to merge multiple styles of reading to draw the meaning. आपको डिटेल रीडिंग भी करना है इसका, इन्फ्रेंशियल रीडिंग भी करना है। कोई बच्चा मीनिंग ढूंढ पाया या मैं बताऊं? Should I answer?
सर ग्रह नक्षत्र और वेद को ऐड करके एक पूरा मंथ बन जाता है। मंथ बन जाता है। चलो अब हम बताते हैं मंथ में तो क्या होता है। मंथ में कोई 28 डेज का होता है, कोई 30 का, कोई 29 का, कोई 31 का भी हो जाता है। कहाँ बना? चलो अब जोड़ते हैं हम। हाउ मेनी ग्रहास? कितने ग्रह होते हैं? सर 9, 9। वेद कितने हैं? 4, 8 होता है सर। अभी ये जब लिखा गया उस समय की बात करो ना, वही तो कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट को ये कॉन्टेक्स्ट सर में। नवग्रह। उस जमाने में जब लिखा गया तो उस टाइम में 9 माने जाते थे। ये सर तो नवग्रह है सर। 9 ग्रह हो गए। वेद कितने हो गए? 4, 4, नक्षत्रास कितने हो गए? 27, 27, 27 प्लस 13, 9 और 4 13 इट्स हुआ अ ना, 40, यस सर, इट्स अ 40 टोटल। टोटल 40। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 40। 40 का आधा अर्ध करी 20, 20, 20 20। कोई बना तब खात। किसी की इसमें क्लू है कि कोई सुसाइड करना चाहता है, वो विष खाना चाहता है। सर गोपियां। तो अब आपने ये देखा कि जो है यू ड्रॉ द मीनिंग। ग्रह नक्षत्र वेद सब जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। What do you find? What a great clue. But you need to draw certain inference. आप 40 20 तक तो आ गए लॉजिकल रीडिंग में, डिटेल रीडिंग में। बेटा यू कम टू दी 20, वो 40 का आधा 20 कर लिया। नाउ यू नीड टू ड्रॉ द इन्फरेंस। ये वो गिनती वाला विष नहीं है। द पर्सन wants to commit suicide and this is wish money poison. What a dangerous meaning, what a dangerous inference you have to draw. In the business world, it is required. You need to calculate, you need to be very, very speculative, calculative, mathematical, methodical, and then come to the some inference out of that, so that you can forecast the futuristic problem and sort it out even before the problem may come. अगर हमने कोविड की प्रॉब्लम को और पहले प्रेडिक्ट कर लिया होता कि ये इतना बड़ा डैमेज कर देगा, तो शायद हम क्या कर पाते? उसके मैनेजमेंट के प्रिवेंटिव मेजर उठा लिए होते। बट यू नो अर्थक्वेक आ जाने में, उसके बाद पता चलने में कि अर्थक्वेक आ गया, या अर्थक्वेक आने से पहले 15 मिनट पहले पता चल जाने में कितना फर्क है? पोस्ट अर्थक्वेक इफेक्ट में बी डिवास्टेटिंग and having prediction may save the huge loss of life and property both. So if you want to be a disaster manager, you want to go for disaster management, if you want to be an expert of crisis management, क्राइसिस जब आ गया उसके बाद मैनेज कर रहा है कोई, and if somebody is there who speculates the crisis and gets himself ready, makes himself ready to combat the problem even before the problem comes, कौन बेटर मैनेजर बनेगा? एक जो विभीषिका के दुष्परिणामों को मैनेज कर रहा है,
और एक ने बीबीसी का आने से पहले ही गेस कर लिया और उसको मैनेज करना शुरू कर लिया। सर जिसने पहले गेस कर लिया। ही विल बी बेटर मैनेजर। सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप ये बोलते हमें कहां पता था ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये अगर जो है नॉन मैनेजमेंट फील्ड का पर्सन कह रहा है तो उसको माफी दी जा सकती है। कल को आप जो है एमबीए करने के बाद बोलोगे मुझे नहीं मालूम था ऐसी सिचुएशन आएगी। यू हैव अ वेरी नाइस लेक्चर फ्रॉम द एक्सपर्ट। आज सुना आपने लेक्चर मैडम का? डिड यू पार्टिसिपेटेड यस इट? सर। आपने यस देखा? सर। तो उनके लेक्चर में आप जब भी एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एंटरप्रेन्योरियल रिस्क। हम 10 लाख रुपए, ये बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाई करते वक्त कि देयर आर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन इज वेरी गुड, समबडी शुड बी रेडी। आपको पढ़ के क्या पता चलेगा? हाउ टू बी रेडी एंड फोरकास्ट एंड हैंडलिंग द एंटरप्रेन्योरियल रिस्क। आपने एक इंडस्ट्री शुरू करी, उससे आगे बढ़े, उसमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद क्या हुआ? ये अचानक से कोविड आ गया, आपका इंडस्ट्री डूब गया। आर यू रेडी फॉर एनी अनफॉरसीन सिचुएशन? एक मैं तुम लोग को एक मजेदार बात बताता हूं। लेट मी शेयर वन थिंग। अभी मुझे एक घटना पता लगी। हमारे स्टूडेंट बड़े बहादुर हैं। हम जो है एक लड़की को कभी मैंने पढ़ाया था बच्चों। आई विश टू शेयर विद यू। आई टॉट अ स्टूडेंट। उसने क्या करा है अभी मुझे आज पता लगा कि उसने अपना घर बेच दिया और घर बेच के एक डिग्री कॉलेज खरीद लिया, वो भी पार्टनरशिप में। शी इज वेल क्वालिफाइड। वहां पे वो प्रिंसिपल बन गई उस डिग्री कॉलेज में। और उसके बाद जिस मकान में वो उसने जिस मकान को उसने खुद बनवाया था उसी में किराएदार के रूप में रह रही। She is staying in the same building as on rent that she constructed with the hard-earned money with herself and her husband. ये सिचुएशन आपको पता लगी? She sold her house और घर बेच के क्या किया, एक डिग्री कॉलेज में पार्टनरशिप खरीद कर ली। और उसके बाद उस डिग्री कॉलेज की वो प्रिंसिपल बन के बैठ गई। वहां पे शी वॉज क्वालिफाइड। एंड देन घर बेचने के बाद उसी मकान में जो घर दूसरे को बेचा उसी में किराए पे रह रही। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरियल रिस्क। उसके बाद कोरोना आ गया, एडमिशंस लोगों के इधर उधर होने लगे। नए कॉलेज में कौन एडमिशन लेगा? हाउ विल द थिंग्स रन एंड गो? So entrepreneurial risks are not so easy. Sometimes they takes away from you many things and they test your destiny. Rather you can say your destiny start testing you. But that way, tomorrow her success story will be a case study itself. अगर वो लड़की भविष्य में सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी केस स्टडी जो है खुद, मतलब सक्सेस स्टोरी एक केस स्टडी बन जाएगा। गॉट इट? सो टेकिंग डिसीजन इन एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, कोई भी आप प्रतिष्ठान खोलते हैं उसमें ग्राफ एक जेट स्ट्रेट नहीं होता।
It sometimes fluctuates, ups, downs, ups, downs, ups, downs. You need to manage the thing that way. Got the point? अभी भी कोई सवाल है तो पूछिए. अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. किसी ने आपको लेटर लिखा है, पार्टनरशिप का ऑफर दिया है. हाउ विल यू हैंडल? Should you go in the partnership or not? Should you avoid the things, or should you, which offer you should click and which offer you shouldn't? Ask any question if you have. प्लीज बेटा, हम 2-3 मिनट में छोड़ना चाहते हैं आपको. आपको जो भी पूछना है जल्दी से पूछ लो, क्योंकि हमको थोड़ा सा एक मीटिंग में भी जाना है. आई नीड टू गो टू वाइस चांसलर ऑफिस, बट आई नीड टू आंसर योर क्वेश्चन. अभी लेक्चर फिनिश हो जाएगा. फील फ्री टू आस्क. Yes, students. In language is very tricky, and you need to understand that whether it is philosophical, it's a language of business, even philosophy of business, philosophy of language, you need to realize whether it is matching your ideas and philosophy, or it's an ideological mismatch. You need to decide everything beforehand if you want to be an entrepreneur by starting up a new venture. If you want to foster that startup by incubation and bringing it up into the industry of the society, you need to realize. Clear? Profit making industry, if you are blessed with proper skills, you can convert a loss making industry into a profit making industry. And if you are not well trained, the things may go otherwise. You may convert a profit making industry to loss making industry. Decision will always be yours, and there lies the challenges of an entrepreneur. If you have any query, any question, please feel free, or I will be winding up the talk at this very point. सर कैन आई आस्क यू समथिंग? सर Yes. जैसा आपने बोला अभी, जो जो भी हमारे के alumni हैं, उन्होंने अपना घर बेच के कॉलेज को खरीदा, Not फिर alumni, उन्होंने सब not alumni of this institute, मेरा student from the other institute. ओके 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 ओके. तो सर उनका मेरा ये मानना है कि उन्होंने क्या मतलब थोड़ा सा उनको, एक होता है सर रिस्क लेना, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना. आप ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकती कि आप अपना घर बेच के किसी कॉलेज को ले लो, फिर उस कॉलेज का फिर आपको सर पास चीजें देखना पड़ती, फ्यूचर देखना होता है, कितना हमारा क्या कॉस्ट लगेगा. तो वो मेरे को सर डिसीजन थोड़ा बहुत वीक टाइप का लग रहा है. वो मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं मन में था, मैं तो तुम्हें शेयर कर दिया सर, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन द स्टार्टअप सर. मैं को फाउंडर रह चुका स्टार्टअप का. तो वहां पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जो अभी जो करंट सिनेरियो में हम देखते हैं. तो वही मैम का जो वो था कि अपना घर बेच के कॉलेज ले लेना, फिर उसको एज अ प्रिंसिपल वहां बन जाना, वो बहुत मुझे अलग चीज लगा. वो थोड़ा सा मुझे जानना था, केस थोड़ा और अच्छे से जानना था. Yes, nice question. ये आप जो है ना अटेम्प्ट किए, रीडिंग
बिटवीन द लाइंस। वो पहले से एक स्कूल ओन करती थी और उसकी प्रिंसिपल थी। इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसको यूपी में कॉलेज बोलते हैं, वो हाई स्कूल बोलते हैं हरियाणा में। सो शी वाज हैविंग सम पार्टनरशिप इन अ स्कूल एंड वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द स्कूल। ठीक है, तो ऑलरेडी बैकिंग है उसके पास। लेकिन ऑल टुगेदर उसने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपना डिग्री कॉलेज डालना है, मेरे को कॉलेज उसमें आना है। तो स्कूल को दे दिया पार्टनरशिप में, जैसे आपने स्टार्टअप के पार्टनरशिप में दे दिया। अब कॉलेज की पार्टनरशिप में आने के लिए उसने अपना मकान बेच दिया। शी सेल्ड इट आउट। देन आफ्टर दैट उसको सेल करके, और उसने हर हाउस वाज इन मिड सिटी ऑफ हिसार। हरियाणा में एक जगह है हिसार, आप जानते होंगे। यस सर, आई नो। हाँ, तो हिसार इज अ कॉस्टली सिटी। इट इज आई थिंक इवन कॉस्टलियर देन गोरखपुर, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी के उसमें जाओगे तो। हाँ यस सर। तो वो गुड़गांव के बाद हमको लगता है कि चंडीगढ़ और हिसार की प्रॉपर्टी के रेट्स आएंगे उधर, या बहादुरगढ़ के आएंगे। गुड़गांव का थोड़ा ज्यादा है, वो है फरीदाबाद, गुड़गांव और जो है बहादुरगढ़, इनके बाद उसका रेट आएगा। So her house was in the mid city of Hisar. She was also running a school in the Hisar Kant area, something. But after selling that, she purchased a college in remote, a bit remote, 22 kilometers away from Hisar. She sold out her house. So it's not that she was having no funding at all. ये हमारे जैसे लोगों के लिए, मान लो अगर मैं, लेट इट बी वेरी फ्रैंक, मैं आपका टीचर हूं, लेकिन आपका हेड भी हूं और एक गार्जियन की तरह हूं, तो मुझे आपसे कुछ चीजें हाइड नहीं करनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करनी चाहिए। अगर मान लो लेटेस्ट से कि मैं अपना घर आज बेच के इंडस्ट्री में चला जाऊं अपनी ये जॉब छोड़ के, तो मैं बैंकरप्ट होने की कंडीशन में जा सकता हूं, बिकॉज आई डोंट हैव अ ह्यूज फाइनेंशियल बैकिंग। लेकिन जो पहले से इंडस्ट्री में है, बेटे आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे डेफिनेटली। आपने स्टार्टअप डाला और ये कोविड ने तो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को टेस्ट कर लिया, बहुत यस टफ सर। सिचुएशन। यस सर। लेकिन वो जिसका ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड दो दो उसका स्कूल है, एक उसके चाचा जी ओनर है और एक उसका पार्टनरशिप में वो है अपने अंकल के साथ, इंटर कॉलेज चलते थे। एक तो उसके चाचा जी का फुल्ली है, वो भी वहां वो प्रिंसिपल थे, यहाँ ये थी। तो एक स्कूल तो उनका है, एक इसमें जो है चाचा ये प्रिंसिपल थी और इसका शेयर था। तो वो दोनों स्कूल, बोथ ऑफ देम आर रनिंग वेल ओवर देयर, बट दिस वन वाज द न्यू वेंचर। तो जहां पे ये चाहती थी कि इसका बड़ा शेयर हो, और इसने, हालांकि मैं इंडिविजुअली कभी पार्टनरशिप के बिजनेस को मैं प्रेफर नहीं करता, क्लियर, एज ए पर्सन मैं नहीं प्रेफर करता कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस डील किया जाए, क्योंकि सम टाइम वो पार्टनरशिप में या तो प्रोफेशन बचेगा या रिलेशन बचेगा। आप ये मान के चलो, अगर आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो दैट ओनली वन थिंग यू विल बी एबल टू सेव, ईदर प्रोफेशन और रिलेशन। एंड उसमें भी कई बार दोनों खत्म हो जाते हैं। Sometime you lose at both the front. You lose relationship also, you leave professional terms also, or professional margins and benefits also. So it's not that vague that you thought at the beginning. आपने जब अभी मेरे से केस स्टडी किया उसका, तो आपको अब टेक्स्ट में वो वेग लगा जब मैंने ये कहा कि सी डिड दिस, सी डिड दिस, दिस दिस दिस। सो द टेक्स्ट वाज वेग, but the context, if you have when you approach to the context and you come to the detailed study as suggested by your classmate Akriti, when you come to the detailed study, so you find that in background something was there of the similar nature. That's why she was able to take the, it was not vague one, rather it was a bit calculated,
not absolutely vague, है ना? अभी आपको हाँ रियलाइज हाँ एक और ऑप्शन था उनके पास, वो शायद अपने घर को एक सिक्योरिटी रख के, कोलेटरल सिक्योरिटी रख के वो लोन भी ले सकते थे, तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा था सर, तो इस वजह से मैंने पूछा था। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया था। फिर उसको पता नहीं, उसका हर हस्बैंड वाज इन बैंक इटसेल्फ, तो कुछ अपना उन्होंने सोचा होगा इंटरेस्ट का प्लस माइनस व्हाटसोएवर। ठीक है, अब आई डोंट नो कि मैंने उन्होंने क्या कैलकुलेटिव डिसीजन लिया। तो कोलेटरल पे भी इट वाज अ ग्रेट आइडिया। आप जो है एकदम सही क्योंकि बिजनेस। सर बहुत बड़ा डिसीजन होता है, आप अपने घर को बेच देना जिसको अपने लाइफ टाइम अर्न करके बनवाया है, बेच दिया, फिर कहीं पे पैसा लगा दिया, फिर उससे रिटर्न ना आए, और ऊपर से कोविड आ गया, वो बहुत हिट हाँ, हार्ड किया उसने, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज थी उन लोग के लिए। तो अभी लाइक देवर, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि शायद वो उनका कुछ अच्छा हो अभी। बिल्कुल बेटे, वंडरफुल। ठीक है, ये दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू थिंक। बट वो ऐसे एज ए स्टूडेंट ही वाज क्वाइट डेयरिंग। जब मैं उसको पढ़ाता भी था बहुत साल पहले, ये तो मुझे आज पता लगा है। आई ऑल्सो गॉट दिस इंफॉर्मेशन टुडे ओनली, कि मतलब शी हैज डन दिस। तो एंड बट इट्स गुड दैट कि अब आज के जमाने में एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑल टुगेदर ऐसे पैसा लगाना, इट इज रियली रिस्की, रिस्किंग योर एवरीथिंग। So it's not the flat decision, rather it's a really tough decision. और तो ये आपको रीडिंग के केस स्टडी जैसे अभी किया आपने, तो एक हमने आपको टेक्स्ट दिया, फिर आपने उसकी डिटेल स्टडी की, कॉन्टेक्स्ट स्टडी किया, आपने जो क्वेश्चन किया, आकृति ने उसकी डिटेल स्टडी प्रपोज की, उसके अब डिटेल स्टडी और केस स्टडी करने के बाद हम इन्फ्रेंशियल रीडिंग किए, और क्या इन्फ्रेंस पे आए, ब्ला 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 4 पॉइंट लिखे। पहला जो आपने बोला कि जब तक आपने केवल टेक्स्ट पढ़ा तो आपने बोला इट वाज अ वेग डिसीजन। देन सेकेंड, जब आपको हमने कुछ क्लूज दिए, कॉन्टेक्स्ट दिया, तो आपने और डिटेल स्टडी की, फिर आपने एक ऑप्शन बताया, यू गॉट टू दैट ऑप्शन कि कोलेटरल उस पे जाके और लोन ले सकते थे, और वो ज्यादा सेफ साइड रहता। अदरवाइज रिस्किंग सच इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन, जबकि कोविड इज एट इट्स हाइट एंड इंडिया इज फेसिंग वेव्स आफ्टर वेव्स। ठीक है, ये सारे ये फाइंडिंग है बेटा, ये क्या है, इसका रिसर्च का या डिस्कशन का आउटपुट है, वेव्स आफ्टर वेव्स। फिर आपने बताया, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से शेयर किया। हमने भी बोला कि कई बार ऐसे पार्टनरशिप में क्या होता है, समटाइम यू लूज ईदर ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट और ऑन द पर्सनल फ्रंट। ठीक है, सो समटाइम you try to save your relationship, and sometime you try to save your profession. And we are we are yet to be that much professional as foreigners, or because they don't mind and they don't consider anything as hurdle in their profession. As and when they come out with a profession, it's an all-out venture for them. They neither think left, they neither think right. Their profession and professional commitments are uncompromisable. Clear? तो अभी ये हमने डिटेल स्टडी भी किया, केस स्टडी भी किया, कॉन्टेक्सुअल स्टडी भी किया, देन अल्टीमेटली वी रीच टू दैट। तो इतना तरह की आप रीडिंग करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। क्लियर? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी कुछ क्लैरिटी आई इस केस से? बहुत अच्छे बेटा, अगेन तुमने भी इतना अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि इससे हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, नाउ लेक्चर्स आर क्लियरर अ बिट। सो शुड वी स्टॉप इट? हमको तो लग रहा है हम बीसी ऑफिस जा ही नहीं पाएंगे, 5 बज गया। तो आई थॉट दैट कि मैं 4:30 तक कंप्लीट कर लूंगा, बट आप लोगों का इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम पहले पढ़ाने के लिए हैं। तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग सेशन and nice discussion with you. Anybody else wish to ask something, or should we stop it?
Should we stop it or continue? Sir, we should stop it, sir. I think time is Yes, up, sir. We sir. should stop. Thank Yes, you sir. so Thank you much. so much, sir. Thank you. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Thank you so much. आज Thank you, आपने sir. how did you like the last lecture of